Hello everyone, I am Aniket, and in this video we will learn URL optimization best practices. So let's start. So first we have is keep URL short and concise, right? So let me give you the example. This is the sheet we have, and for example, this is the keyword we have. We have primary and some secondary keywords for our block. So your URL should be like that, right? So it's let's take an example. It's wait, it's https slash let's example.com slash let's say it's a blog, so I'm using blog folder and only use your primary keyword. That's it. Do not use the exact keyword in your URL. So I will only use customer customer satisfaction. That's it, right? So this should be our URL for this keyword. So आपको complete exact keyword यूज करने की जरूरत नहीं है. जो भी आपका की कीवर्ड है या मेन कीवर्ड है, आप उसे ही बस URL में यूज करो. That's it. And keep your URL short and concise. Right? This is the first practice that you should follow. The second we have is add your primary keyword in the URL, right? So जो भी आपके primary keywords हैं, उसे आपको आपके URL में use करना है and try करना है you only use the primary keyword. So for example, I have a few bad URL examples here that I have listed. So for example, they are using the exact heading in the URL. So they use 9 effective ways to handle angry customers with example. This is very long URL. आपको कोई भी नंबर URL में यूज नहीं करना है, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लास्ट देखोगे तो दे हैव रिटर्न 11 बेस्ट सेल्स कॉल स्क्रिप्ट टेम्पलेट 2022. Again, they are using the year in the URL. This is wrong. So for example, this is 2025. If you are seeing this URL, the customer or the user may thought this content is already outdated because they have written in 2022. So आपको कोई भी नंबर URL में यूज नहीं करना है. लेट्स से आप कंटेंट अपडेट कर रहे हो, 11 बेस्ट सेल्स कॉल स्क्रिप्ट टेम्पलेट की जगह आप उसको कंटेंट डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए आप 3-4 टेम्पलेट उसमें और ऐड कर रहे हो, राइट? उस केस में देन आपका यूआरएल विल नॉट जस्टिफाई द कंटेंट. तो आपको सिर्फ शॉर्ट रखना है. द यूआरएल पैटर्न हमारा इस यूआरएल के लिए अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? दिस शुड बी लाइक दैट. विल नॉट यूज एनी नंबर एंड विल नॉट यूज एनी ईयर. तो ये होगा हमारा यूआरएल और दिस ब्लॉक शॉर्ट एंड कंसाइज एंड द मेन कीवर्ड. दैट्स इट. डू नॉट यूज द एग्जैक्ट टाइटल इन द यूआरएल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, so they are using the exact title of the blog in the URL. See, this is the title and the URL is same. This is not a good practice. Only use primary keyword and keep your URL short and concise. That's it, right? So this is a two important thing. And the next we have is use lower cases, don't use upper cases in the URL. तो अगर आपके वेबसाइट पे ऐसे कोई यूआरएल हैं जो अपर केस यूज कर रहे हैं इन द यूआरएल, यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट यूआरएल. So for example, this is a URL we have created and by mistake someone used like Mazer, they are using capital letter or uppercase. This is not a good way to create your URLs or URL slug. राइट. सो इस केस में क्या करोगे? आप ऑप्टिमाइज करोगे, आप सिर्फ लोअर केस यूज करोगे एंड देन यू कैन रीडायरेक्ट दिस पेज टू योर लोअर केस यू आर, राइट? सो यू कैन चेक ऑन योर वेबसाइट जहां पे भी आपको लग रहा है यू हैव यूआरएल दैट आर यूजिंग द कैपिटल लेटर्स, optimize it, only use lower cases in the URLs. Next, we have avoid dynamic parameter. This is very common issue when it's come to the URLs, right? So dynamic URLs क्या होता है? Let me jump to this tab.
कोई भी यूआरएल जो स्पेशल स्पेशल सिंबल के साथ क्रिएट हो रही है आपके वेबसाइट में, जनरली वो क्या होते हैं, डायनामिक यूआरएल होते हैं. तो दिस इज अ फ्यू एग्जांपल आई हैव एडेड, लाइक दे आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क, दे आर यूजिंग इक्वल एंड. सो जो भी वेबसाइट की फंक्शनलिटी होती है, फॉर एग्जांपल इफ योर वेबसाइट हैज अ सर्च फंक्शनलिटी, there is a high chance this functionality will create dynamic URLs, right? So for example, let me open the website Myntra. So let's open this. I will show you the example of dynamic URL. So this is the pages they have listed, right? So this all pages are the static URLs. So for example, if I open formal shoes, you can see, right? All small case letters and the URL is static. But if I use this search functionality here and I search man formal shoes, right? Now check the URL. This is the dynamic URL, right? So we need to avoid this dynamic URL. So आपको क्या करना है? We need to prevent this URLs to be indexed in Google. Right, so you can use robot.txt to disallow this dynamic URLs ताकि Google इन पेजेस को क्या करे, इंडेक्स ना करे. अगर ऐसे मल्टीपल डायनामिक पेजेस आपके वेबसाइट में इंडेक्स होंगे, देन दे विल क्रिएट द डुप्लीकेट इशू, दे विल क्रिएट द लो क्वालिटी कंटेंट इशू ऑन योर वेबसाइट. Right, so avoid this dynamic URL on your website. You can check if your website has multiple dynamic URL that are indexed. We need to fix this issue. You can use Google Search Console to check if there are any pages that are indexed and with the dynamic URLs. Let's jump to the next point, which is use hyphen note underscore. Right. So in the URL, only use hyphen. आपको underscore use नहीं करना है. Right. So measure hyphen customer hyphen satisfaction. That's a simple URL we have. And this is a wrong URL. If your website has URLs with the underscore, this is not a good practice. You need to avoid this. Again, you can check कि अगर आपके वेबसाइट पे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे आप यूआरएल में बाय मिस्टेक से आपने अंडरस्कोर यूज किया हुआ है, देन यू कैन फिक्स दिस यूआरएल. एंड आप क्या करोगे, जो आपका प्रीवियस यूआरएल है उसको आपके न्यू यूआरएल पे रिडायरेक्ट करोगे. Next, we have the appropriate page URL is a 75 character long, right? So आपको ट्राई करना है ऑलवेज कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग यूआरएल यूज ना करो. जैसे हमने यहाँ पे इस ब्लॉग का एग्जांपल देखा था, तो दे आर यूजिंग द एग्जैक्ट टाइटल इन द यूआरएल विच इज रॉन्ग. तो आपको कोई भी नंबर या कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूआरएल में ऐड करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यूज योर प्राइमरी कीवर्ड इन द यूआरएल, दैट इज कंप्लीटली फाइन. तो नंबर, ईयर्स एंड कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डू नॉट ऐड इन द यूआरएल. कीप योर यूआरएल शॉर्ट एंड कंसाइज, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, राइट. And the last we have avoid duplicate URL with slash or without slash. Again, this also a very common issue in the website. So for example, I have added this example. So in this website, they have two URLs, one with the single slash and one with the double slash, right? So for example, I'm opening this about us page. राइट, सो यहाँ पे आप देखोगे दिस यूआरएल हैज अ डबल स्लैश और ये पेज हमारा ओपन हो रहा है, दैट मीन दिस पेज इज लाइव. एंड द सेकंड वन वी हैव इज विद द सिंगल स्लैश. लेट मी ओपन दिस. सो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस पेज इज ऑल्सो ओपनिंग विद द सिंगल स्लैश एज वेल. तो यहाँ पे दिस टू पेजेस आर एग्जैक्टली डुप्लीकेट फॉर गूगल. सो गूगल जब इन दोनों पेजेस को क्रॉल करेगा तो वो क्या कंसीडर करेगा, इन दोनों पेजेस को डुप्लीकेट कंसीडर करेगा. इस केस में ऐसे यूआरएल आपको अवॉइड करना है कि आपको चेक करना है कि ऐसे मल्टीपल स्लैश या विदाउट स्लैश वाले यूआरएल आपके वेबसाइट पे डुप्लीकेट इशू ना क्रिएट करें, राइट. इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल जो जो भी डबल स्लैश वाले यूआरएल है हमारी वेबसाइट में, उन्हें हम रिडायरेक्ट करेंगे हमारे
सिंगल स्लैश वाले यूआरएल पे। देन यू कैन चेक कि कहाँ पे ये पेजेस लिंक हैं आपके वेबसाइट पे, जो डबल स्लैश वाले हैं। यू कैन रिमूव दोज पेजेस फ्रॉम योर वेबसाइट, राइट? ओनली यूज सिंगल स्लैश, एंड अगर कोई भी पेजेस है डबल स्लैश का, you can redirect to the single slash pages. So this is the practice that you need to follow when it's come to the URL optimization, right? And in the next video, we will learn about the meta title optimization best practices. So please subscribe to this channel for more advanced and practical SEO knowledge. We will meet in the next video. Bye.